Hi guys, welcome back to my channel. So I'm so sorry that you have to listen to this voiceover because I am a stupid person and I forgot to turn on my mic during recording this video. But ये one time only video थी, so I couldn't scrape it, and the recipe turned out to be amazing. So here I'm saying that obviously I'm in a kitchen, so it's a cooking video. So I'm trying Gigi Hadid's infamous vodka pasta. So let's go and see how I made it, and it was delicious. So now you have the ingredients. As you can see, we have the pasta, we have tomatoes, we have onion, we have garlic, we have cream, and we also have a mool butter. Now I love a mool butter and I love cream, but Gigi uses tomato paste. I don't have tomato paste, so I am using fresh tomatoes. It works just fine, so don't worry, I got you. Here we go. Now the first thing that we will do now is to take a pan and put some oil in it. Let the oil be warm for some times and then add your garlic. Let it simmer. As you can see, the garlic is floating beautifully in the oil. Now we'll add some onion to it. Yeah, right. We're adding some onion and then we will mix the both together so that they can be together and not separated. Now as you can see, they look beautiful just simmering in the oil, and I'm loving it. Now I'm adding the tomatoes obviously, and after putting the tomatoes I'm going to mix the all three together. Now as you can see, the tomatoes are getting soft with the heat with the time to time, and this is also a fast forward so that you can enjoy the whole process of just the tomatoes doing their own thing in the oil, and it looks beautiful. I don't have any other words to describe it, but now as you can see, the water is reduced and we have a lot of oil surfacing around. Now I am going to add some Kashmiri chili powder to give it that red color, because obviously I don't have the tomato paste. I am going to mix it so that the tomatoes kind of look darker. Now the moment of truth, I am going to add vodka, and this is the vodka that I am using, hashtag not sponsored. And Gigi uses a tablespoon of vodka, but I am just eyeballing it to 1 tablespoon, and I think I put it a bit more, but it doesn't matter क्योंकि आपकी vodka उड़ जाएगी कुकिंग के दौरान और उसका एक हल्का सा फ्लेवर आएगा और आपको इसके बाद नशा नहीं होगा. So don't worry about it and be happy about it. I was very excited, as you can see, very excited. So now as you can see, the mixture looks very nice and I am adding vodka to it. Approximately 1 tablespoon ही था और मैं अब उसे अच्छे से मिला रही हूँ. अब मैं इसमें डालूंगी क्रीम, और ये मेरी गई थिक हैवी बाज़ार की क्रीम. और क्योंकि काफ़ी सारी क्रीम डब्बी में चिपकी हुई थी, तो मैं उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसको मिला के फिर से डालूंगी. टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये पानी उड़ जाएगा तो आपकी जो ग्रेवी है वो थिक होगी. आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी थिक है. नाउ मैंने इसमें डाला है नमक, और नमक के साथ मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर, और इसी के साथ काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें डाला है, अभी मैंने डाला. या उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी, और उसके बाद मैंने डाला है पास्ता को भी मैं अच्छे से मिलाऊंगी, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाऊंगी हल्का सा, ताकि जो ग्रेवी है और पास्ता है अच्छे से कोट हो जाए. यू कैन सी बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा. और इसमें मैंने डाला खूब सारा बटर. ना बटर मैंने बहुत ज़्यादा डाला तो उसकी वजह से बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा था, बट आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इट्स इम्पॉर्टेंट. मैंने ज़्यादा डाला था, उससे ज़्यादा फ्लेवर आया, मुझे मज़ा आया. आई एम नॉट कंप्लेनिंग. सो here it is. Now it's time for us to plate it. Okay guys, so here is our pasta, and the pasta looks amazing. It looks just like
आई हैव सीन इन द पिक्चर्स। एंड इसको मैंने थोड़ा गार्निश करा है मोज़रेला चीज़ के साथ। अब मैं आयुष को बुला रही हूँ, जो कि मेरा भाई है, और वही मेरी सारी डिशेस को टेस्ट करता है और मुझे बताता है कि कैसी बनी है। तो ही इज़ माई अल्टीमेट टेस्टर। तो ये वो आया और उसने टेस्ट करा, ये उसके हाथ से गिर गया एंड मैंने आपको दिखाने के लिए इसे ऊपर करा, और उसने कहा कि इट्स अमेजिंग। अब मैंने टेस्ट करा एंड आई वाज लाइक, सी माय रिएक्शंस, you know it tastes good when you see that type of reaction. It was very natural और I love the pasta. It was super super yummy. मुझे बेचना हो तो मैं 250 रुपये पर प्लेट पे बेचूंगी, पर मैं बेच नहीं रही हूँ, आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ, सो जस्ट ट्राई इट आउट। एंड अब मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने इस वीडियो को देखा। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने चेक नहीं करा कि माइक लगा है या नहीं लगा है, बट बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I will see you guys in my next video. Till then, bye.